सारी डिटेल आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी हमारी बस यहाँ पे रुकी है, ब्रेक है, वॉशरूम ब्रेक है। तो लगभग यहाँ से हनोई सिटी से ये बस 160 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। लगभग 2 घंटे का सफ़र होगा ये। और यहाँ पे जो गाइड है बड़ा अच्छा उन्होंने हमें समझाया। 2-4 चीज़ें मुझे नहीं पता लगी हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ना घरों पे टैक्स होता है, जो बड़े घर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ना मोस्टली घर छोटे हैं, मतलब साइज़ उनका कम है और वो लंबे होते हैं। तो लोगों ने टैक्स बचाने के लिए ये स्कीम लगाई कि लंबे घर बनाओ, छोटे बनाओ। छोटे होंगे पर लंबे होंगे तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात इन्होंने जो बताई है कि जो हो ची मिन जी हैं जहाँ पे, वो एक जैसे रॉबिन हुड है ना थे, वैसे ही हो ची मिन क्या करते थे, वो अमीरों से पैसा लेके गरीब लोगों को देते थे। तो इसीलिए जो लोग हैं उनको प्यार करते हैं और उनकी जो याद में उन्होंने इतना वियतनाम में उनके जो यादगारें बना रखी हैं। दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या है कि ये हमें जो घुमाएंगे जगह, उसमें एक तो पर्ल, जहाँ पर्ल बनते हैं, कोई पर्ल वगैरह बनते हैं, वो जगह है, ठीक है। एक फिर ये हमें केव वगैरह में लेके जाएंगे, हाइकिंग कराएंगे, और कुछ बम्बू राइड्स वगैरह वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें लंच भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपको वेजिटेरियन की ऑप्शन मिलती है। अगर नॉन वेज हो तो आपको चिकन और सी फूड मिलेगा। पोर्क वगैरह नहीं रखा हुआ, क्योंकि मोस्टली फॉरेनर पोर्क नहीं खाते। तो चिकन वगैरह आपको बढ़िया मिल जाएगा। और मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो आपको वेज में पूरी वैरायटी मिल जाएगी। और इनके पास 2 दिन या 3 दिन का टूर भी होता है, बट जो उसमें चीज़ें सेम रहती हैं। बस केव्स, जो गुफाएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो आप वो भी कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। पर मेरे हिसाब से 1 डे का ही काफ़ी है। तो अभी ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप पर्ल सिटी होगी, यहाँ पे पर्ल वगैरह, मोती वगैरह बनते हैं। तो वहाँ जाके मैं आपको बाकी की अपडेट दूंगा। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे पर्ल सिटी है, मतलब इनका यहाँ पे पर्ल वगैरह होते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे बस लगभग 45 मिनट के लिए रुकी है। और ये यहाँ पे एक बन रखा है ये। My name in Vietnamese is Hoa and Daphne. In English is flower. So it will be my honor to show some information about our company and the process of how we manage automated and manipulated cultural pearls. So please follow me this. दोस्तों ये पर्ल वगैरह जो जहाँ बनते हैं, तो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे बनते हैं, ये प्रोसेस वगैरह बताएंगे। Everybody, please come in and surround here, please. Surround here, please. So the next destination gonna be Halong Bay, right? Yes. Halong Bay is very famous. It's one of the 7 wonders of the world. It's famous for many things. It's small islands, guarantee the deep water and abundant food. And we have 2 pearl farms in Halong Bay, surrounded with many small islands. And in front of you here is a 3 types of pearl oyster that we are currently cultivated in our farm. First, we have Akoya pearl oyster. Akoya pearl oyster is the smallest and the most common type of pearl oyster in the world. It takes around 2 to 3 years to fully develop and give the pearls. And although the size of this pearl is only about 3 to 10 millimeters, but the color of it is very beautiful with pink, white, gray, and yellow. Next, we have Tahiti pearl oyster right here. Tahiti pearl oyster is originated from Tahiti Islands, and it also took about 2 to 3 years for fully develop and give the pearls. But the size of this pearl is a little bit larger, about 8 to 15 millimeters. And I believe that you, maybe some of you heard about the mention of black pearls.
The Jack Sparrow in the machine, the cost of the black bass, have you ever heard about it? Yes. So Taiji pearl is famous for the very beautiful, very charming, natural color black. And last, this big one right here, South Sea pearl oyster. South Sea pearl oyster is the biggest and the rarest pearl oyster in the world. The size of this pearl can range from 8 millimeters to over 20 millimeters for this pearl. And to achieve that size, you can see the shell of this oyster had to be very massive. And it also took very long, from 6 to 8 years, for the oyster to achieve that humongous size. And ladies and gentlemen, have you ever seen a natural pearl before? Have you ever wondered how an oyster are capable of creating something that beautiful? So this is a natural pearl right here. A natural pearl is formed when an irritant, like just a tiny grain of sand or parasites, got inside of the oyster. And the oyster is instantly realized that this is a threat. So it's released a substance called niyo as a defense mechanism against the threat. So the layer of niyo covers the irritant years by years, and it's formed pearls like that. But you can see that the pearl does not look like any of our picture right here, and it's not actually jewelry material. So we create this. This one is the core, like, or we call it nuclear. This core is made from the shell of the giant clam. We cut and polish the shell using machines. So when we implant it inside the oyster, it will help create rounder, more perfect pearls in a shorter period of time. With a higher efficiency. So please follow me to the implanting station by this way. तो दोस्तों ये देखिए, ये पर्ल्स वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं सारे. तो अभी हमें और कुछ भी दिखाएंगे, आगे लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए. You can go behind the counter to see the process if you want, and don't be shy, gather all. तो अभी ये प्रोसेस बताएंगे. So you can see, this is an oyster donor, and the only thing we took from the oyster donor is the membrane. You can see this side the membrane is still intact, but on this side we took the membrane out, and the membrane is keeping right here fresh and moisture with this antibacterial liquid. Then the second step, our technician will open the oyster so slightly to avoid damage the muscle of the oyster. Then she made a tiny line in the pearl sacs of the oyster and put a piece of membrane inside. And after that, she immediately followed up with a pearl right here. So the pearl and the membrane are kept close together to help the oyster. Like the pearl is here to mimic the irritant. So create more beautiful pearls. In just about 2-3 years compared to maybe 5 to 6 years in nature. So at the end of the day, our technician will gather all of them and bring them back to the farm. And with this oyster, our technician will open an oyster first to see if we had any pearls inside. Because the chance of having the pearl is just 30%, and the chance of having the round perfect pearl is even slimmer, which is 10%. I have a question. Yes. The oyster is still alive or it's already dead? When we open it, it's dead. But this one is live, that one is live, but as soon as we open it, so
So you can see very beautiful pearl right here. You want to take a picture? I'll leave it here for a few seconds. So you can see right here we have our pearl quality chart ranging from B to 4A. And with B quality is the lowest quality and 4A is the highest quality. You can see we have very high percentage of getting the B quality pearls. So we usually grind it down to powder and use for cosmetic purpose. But sometimes if the pearl are still beautiful, even though the low quality, we will make it into inexpensive jewelry. You can see we have a very beautiful pearl right here. This one is maybe a 2A quality pearls, and I believe this will turn into a very beautiful piece of jewelry. So please follow me to the processing station to see how our technician turns the pearls into jewelry. तो अभी हम दोस्तों प्रोसेसिंग स्टेशन में जाएंगे। यहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसको प्रोसेस कर रहे हैं। So you can see right here is our technician. The job is to choose the pearls with the similarity, color, style, shape, and quality. You can see pearls may look similar when they are all big in one part like that, but when you take it to up, you can definitely see the difference. If they are even they are same quality. Pearls is melted. And the flower shape and the heart shape right here is actually the mother of pearls, the shell of the oyster. We turn the shell into beautiful jewelry like this and souvenir like display right last pearl. And the oyster meat is actually very delicious and nutritious. So we cook the meat into various different dishes, and then with that one man actually eat the oyster raw. When we open it, to show the pearls earlier. So he won't eat it, so he can't eat it. So keep it with some lamb and wasabi. And what do you try to want to eat? So ladies and gentlemen, our last stop will be inside the workshop. Please follow me this one. तो दोस्तों यहाँ पे शॉप है जहाँ पे आप पर्स वगैरह बाय कर सकते हो। तो ये सारी ये शॉप है यहाँ पे। So, ladies and gentlemen, this is our sample price tag with all the information of the pearls in it. You can see this product, this is the name of the product. Earrings, necklace, bracelets, pet. And this is the type of pearls we use for our product. And this is the size of the pearls, the quality of the pearls, 4A, and the materials used for the setting, gold, white gold, and silver. As you can see, this is the price tag in the Vietnam of our purse. And the smaller, 7 million. And the smaller number above here is the price tag in US dollar, 320. So it's easier for you to convert it to your own currency if necessary. So in this room we have our material setting with gold and white gold. The next room, the material setting is in silver. Outside we have a coffee shop, so you can go there to tea and coffee. And I believe the tour guide are already waiting for you with the card. So thank you so much for spending time with me and I hope you have a great day. दोस्तों ये सारे पर्ल यहाँ बिकने के लिए रखे हुए हैं और इनके प्राइस $72, ये सारे देखिए, और इसका प्राइस 1,20,000, 1,30,000। तो ये इनके अलग अलग प्राइस हैं, डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का पर्ल, ए क्वालिटी है, AA है, AAA है, उस पर डिपेंड करता है ये। ये देखिए 21 करोड़ वियतनामी डोंग का है ये।
2 करोड़ 2 करोड़ 13 लाख। तो ये सेट हैं, ये देखते हैं कितने के हैं। ये है ये तो सस्ता है ये वाला। अच्छा, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, मतलब क्वालिटी कौन सी है डिपेंड उस पर करता है ना। With one pearl. So you put it here. तो ये सारे ये यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी है। तो मोस्टली सिल्वर में है ये सारा कुछ। लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी है यहाँ पे 43 लाख का है, 43 लाख। और ये पेन वगैरह भी हैं। दोस्तों ये था यहाँ पे जो पर्ल वगैरह यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, बट अभी यहाँ पे जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगे हैं ये। और ठीक है, आके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद नेक्स्ट डे होगा हमारा, हालोंग पे जाएंगे, वहाँ पे लंच वगैरह करवाएंगे ये। और काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस बना रखा है इसको इन्होंने। तो यहाँ पे छोटा सा कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आप कॉफ़ी और चाय का मजा लेते हो। और मेरे साथ अपने इंडियन भाई भी मिल गए यहाँ पे। भाई बेंगलोर से हैं, है ना? पुणे से हैं। तो बस ट्रैवलर हैं। शौक जो घूमने का होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है बंदे का। जैसा पूरा नहीं होता, वो कभी पूरा नहीं होता। ठीक है ना? टाइम, रिसोर्सेज कभी नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है। या तो आप बैग उठा के निकल जाओगे, दुनिया ही देखनी है, और उससे अभी पेट नहीं भरता, है ना? तो ये तो एक अच्छी बात भी है कि हम दोनों मैनेज कर पा रहे हैं। हाँ, मैनेज कर पा रहे हैं। जितना घूम पाएंगे, ज़िंदगी छोटी है, ना 100 साल की ज़िंदगी है, पता नहीं 10 साल बचे हैं, 20 बचे हैं, 50, किसको कुछ नहीं पता। जितना घूम सकते हो घूम लो, यही है और कुछ नहीं है। सबको यही रह जाता है, बस यादें हैं जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। तो अभी आपको मैं मिलूंगा क्रूज़ पे, जो भी क्रूज़ छोटा है बड़ा है, पता नहीं कौन सा साइज़ का है, छोटा ही है आई थिंक, ना? हाँ, छोटा ही होगा। तो उसमें जाके आपको बताते हैं कैसा लंच ये देते हैं, क्या रहता है उसमें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।